मीशत पर नज़र डालते हैं और बिलखुसूस किसी ख़ास इंडस्ट्री की हम हमेशा बात करते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज़ वंडरफुल टू हैव कॉर्पोरेट लीडर्स कम इन एंड टेक अ लिटमस टेस्ट। उनसे भी पूछा जाए कि हाउ आर दे मेकिंग सेंस ऑफ इट एंड एन आउटसाइडर्स व्यू इन अ वे कि अगर आपने वक्त मुल्क से बाहर गुजारा है, मुल्क में आप पले बड़े हैं, वक्त यहाँ पे गुजारने के बाद यू हैड दी अपॉर्चुनिटी टू सर्व अ सेकंडमेंट आउटसाइड, जब आप वापस आते हैं तो क्या पाया? ये साल पाकिस्तान के लिए कई हवालों से मुश्किल तरीन साल था। अब इस पे कई लोग बात करते हुए ये भी कहते हैं कि सिद्रा, ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, मुल्क नाजुक तरीन हालात से गुजर रहा है, लेकिन वाकई अगर हम लोगों की तरफ देखें, अगर हम तमाम एनालिस्ट एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ देखें तो 1971 के बाद ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा पॉली क्राइसिस है। यानी एक यक न शुद्ध दो शुद्ध, जैसे कहते हैं ना, वो आपने 5 दिशाओं से आपके ऊपर एक कोई हमला हो रहा है और आपने तमाम ही एरियाज़ में अपनी जो जंग है उसको जारी रखना है। बहरहाल जी, इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इन आवर कॉर्पोरेट कॉन्वर्जेशन मिस्टर अली जलील, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्रॉन पाकिस्तान से। इनसे एक बहुत पुरानी वाबस्तगी है एंड ही इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड, वेल रिगार्डेड कॉर्पोरेट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। तो आइए इनसे जानते हैं कि हाउ डज़ ही फील कमिंग बैक। इट्स बिन अ ईयर सिंस ही इज़ बैक इन पाकिस्तान, लेकिन इनसे जानते हैं कि व्हाट इज़ हिज ओपिनियन ऑन द करंट सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अली? बस I'm well. Ali, I've always felt that you're a big advocate of the potential of Pakistan, and a lot of subject experts, corporate leaders have been very worried. कल हम यही बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर बिलखुसूस, यानी they're trying to make sense of what is happening. आप कैसे देखते हैं? The rupee is in a free fall. What does it mean for the Pakistani economy? It doesn't bode very well, at least short term. अगर आप देखें तो when I came to Pakistan तब डॉलर कोई 170 रुपए का था, and today it's in the open market 308 का है if you find it. So obviously there's a huge loss as far as depreciation is concerned, which has resulted in hyperinflation, lots of issues with the industry, and every industry is suffering. So short term things are not looking good. Companies like ours who depend on imports, क्योंकि device industry, healthcare device industries is mostly dependent on imports from outside. तो उनके लिए तो बहुत ही challenges हैं। एक तो ये है कि जी आप LCs का प्रॉब्लम अभी आया हुआ है हमको, और कीमतों का, यानी लोगों की दस्तरस से इलाज मुआवजा और यानी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के लिए अपने सिस्टम्स को, चीज़ों को अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है। सो हाउ आर यू फ्लैगिंग दिस ईयर इन द कमिंग ईयर? आर दीज डिफिकल्ट ईयर्स एंड दैट इज़ व्हाट द रीजन और योर हेड ऑफिस इज आल्सो अलाइन्ड विद? Short term outlook, and by short term I mean the next 12 months are going to be very challenging. A lot will depend on कि जी कितनी जल्दी stability आती है, because stability is very important for any economy, and that's what people look at, and investors look at कि political stability है. If we are going to make investments, are we going to be able to repatriate that money? So ये सारी चीज़ें जो and the size of business has squeezed. अच्छा, कई लोग ये realize नहीं करते, कई लोगों को लगता है कि जी जो भी बजट था अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो तो रुपी वैल्यू में बढ़ गया है, लेकिन what you don't realize is कि जो प्रॉफिट है, जो स्टेक है, जो वापस जाना है, वो सुकड़ गया है। क्योंकि अगर आप कितनी कीमत बढ़ा देंगे, वॉल्यूम्स में अगर आप टारगेट मीट भी कर रहे हैं, when the principal has to take it back in dollars, that's squeezed, that's shrunk. Absolutely. So वो वाला तो, and that's a very good point, क्योंकि people say कि जी आपकी तो 30-40% बढ़ गई है, बिजनेस बढ़ गया है। I mean the fact is कि जी आपका 70% जो है devaluation हुई है. So how do you account for that? So these are challenging times, as I said. We don't see a short-term resolution. Hopefully, inshallah, if things settle and there's political stability, elections, so on and so forth. IMF, of course, we've been hearing about that to happen anytime, but it's not happened unfortunately. तो बिल्कुल आसान करते हुए, for every $100, यानी अगर कोई फॉरेन कंपनी पहले पाकिस्तान से रेवेन्यू की मद में या प्रॉफिट की मद में $100 लेके जाती थी, आज वो गिरकर $50 हो गया है। तो आप किसी भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि ये मार्केट कितनी लुक्रेटिव है, लेकिन या कितना वो केस स्टडी प्रेजेंट करती है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी बड़ी है और हमें उम्मीद है कि हम इस टर्मोइल से निकल आएंगे। अली, कमिंग टू योर सब्जेक्ट, मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द इकोसिस्टम लाइक एंड व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट for healthcare devices and gadgets, and what is the role that Braun is playing in there? Okay, so Braun has been in Pakistan for many years. पहले तो we were here indirectly थे, फिर 2007 से we've been having our own presence. We've got a big team. We've got offices all over Pakistan.
We are a German company, a 180-year-old, privately owned, one of the global leaders of anesthesia. We are also one of the global leaders of cannulas जो होते हैं उसके. So obviously we play a very critical role in surgeries essentially throughout Pakistan, throughout the world. इकोसिस्टम की जहाँ तक आपने बात की तो डिवाइसेस हेल्थ केयर डिवाइसेस का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में, एंड आई मेंशन इट बिफोर, इट्स मोस्टली import business. We get devices from outside, unlike pharmacies or pharmaceutical companies जिनके कुछ अपने productions हैं यहाँ पे, by and large सब बाहर से आता है. तो there's a high dependency on exchange rates, and obviously then हम लोग जो हैं as B Braun, since we've been here for a very long time, our stakes are high and we are very well entrenched. तो anesthesiologist के साथ critical care में जहाँ पे भी है तो we feel कि we have actually done our part in the education, in the training, so on and so forth, and we will continue to do so. Publications जो है हम लोग जो है we do regular publications with specialists, cardiologists, so on and so forth. इसके अलावा मैं देखती हूँ कि not just the devices, the bigger devices, the heavier investments for hospitals, but also personal gadgets. I mean, a lot of people who would like to test and keep an eye on their blood pressure and diabetes, आपका glucometers etc. ये भी आपके पास मौजूद हैं और यकीनन कीमतों में फ़र्क आया है. इस पे बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.